Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So, students, this is your block 8, and this is the second part of your block. Now, student, tell me this is a story Annie's Ant Adventure. Now, student, tell me who is the character of the poem? Who is the character? Who is the main character of the poem? And second one, what did Annie see that are real? Now let's discuss. Now look at this story. Who is the main character of the story? Annie is the main character in the story that goes underground after becoming smaller. देखो यहाँ पे वो स्मॉल होने के बाद कहाँ चली गई वो अंडरग्राउंड जैसे यहाँ पे राइट कर रखा ना डीप डाउन अंडरग्राउंड. सो एनी इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी दैट गोज अंडरग्राउंड आफ्टर बिकमिंग स्मॉलर. वो स्मॉल हो गई थी ना. शी सीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्स वर्किंग टुगेदर. देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंड्स है ना वर्क कर रही थी. वर्किंग टुगेदर. एंड्स really work together but they don't have kitchens. So ants work करती हैं, that is real part, and there is a kitchen and they are cutting and cooking, that is imaginary part of the story, sorry, imaginary part of the poem. So student, I hope it is clear to you. Now students, today we will create stories that talk about a magical adventure. So students, you have to write down a story or create a story talking about a magical adventure. So students, think of a character that goes somewhere after becoming smaller and something magical happen to him or her. Think of the beginning, middle part and ending part of the story and write down your own story. Okay students? So when you write down a story, you have to think the character names and think about different events and the story take place. It means setting. आपको setting को ध्यान में रखना है. आपको जब story write करोगे तो setting, you have to think about the setting, characters and the main events of the story. So students, write down your own story in your English notebook. I hope you have done this work. Now student, tell me, how can we write a fantasy story? Fantasy story means we can write a fantasy story by thinking about the different elements that the story is made of, such as characters, the settings, the events that take place. Details about the character, setting and events can be real or imaginary. तो जो fantasy story होती है उसमें क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों होते हैं. Tell things that cannot be real happen, add a touch of magic. Describe the place where the character goes and write with the beginning, middle and ending parts. So student, tell me, how can we use a story map for writing an original fantasy story? And what should we keep in mind while writing a fantasy story? And how is the fantasy story different from other stories? So student, let's discuss the answer of these questions. So a fantasy story talks about things that cannot happen in the real world. The first point is tell things that cannot real happen. Okay students, add a टच ऑफ मैजिक. उनके अंदर आपको मैजिक का टच देना है जब आप सब फंटेसी स्टोरी राइट करोगे. व्हेन राइटिंग अ फंटेसी स्टोरी वी मस्ट टॉक अबाउट द कैरेक्टर एंड डिस्क्राइब द प्लेस और प्लेसेस द कैरेक्टर्स गोज टू. तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब द प्लेस वेयर द कैरेक्टर गोज टू. ओके, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट.
We must also describe the real and imaginary thing that happen with the character in sequence. आपको sequence में write करने हैं जो imaginary और real things हैं in the sequence written right with the beginning, middle and ending point. Okay students, we can fill in a story map with the ideas for the story we plan to write. These ideas can be used to create an original story. Okay students, so I hope it is clear to you. Do you know about the fantasy story? फंटेसी स्टोरी जैसे एनी एडवेंचर है वो फंटेसी पोम है. सो फंटेसी स्टोरी होंगी जिसके अंदर रियल पार्ट भी होगा एंड इमेजिनरी पार्ट भी होगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर स्टोरी मैप. Now let's discuss as to fill in the story map for the fantasy story you plan to write. जो आपने जो फंटेसी स्टोरी राइट की है अपनी नोटबुक में उसके अकॉर्डिंग इस मैप को फिल करना है. यू कैन यूज़ योर ओन आइडियाज़. आप अपने आइडियाज़ हैं वो उसके अंदर राइट कर सकते हैं. दैट कैन थिंक एंड पुट अ स्टार नेक्स्ट टू द थिंग्स दैट कैन नॉट रियल हैपन. जो इमेजिनरी थिंग हैं जो आपने थिंक की हैं स्टोरी में, जो आपने अपनी नोटबुक में राइट की हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग मिडलिंग आपको इस स्टोरी में आपको फिल करना है. और जो रियल थिंग नहीं है उसके आगे आपको एक स्टार, उनके सामने स्टार पुट करना है. ओके, सो टाइटल ऑफ द स्टोरी यू हैव टू राइट डाउन द टाइटल ऑफ द स्टोरी हियर जो आपने प्लान करने की राइट की है. एंड हु इज़ द स्टोरी अबाउट, यू हैव टू राइट डाउन द मेन कैरेक्टर्स नेम हियर. एंड वेयर डज इट टेक प्लेस, यहाँ पे आपको सेटिंग राइट करनी है जो आपकी स्टोरी में जो प्लेस के बारे में बात की गई है. व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी, सो यू हैव टू राइट डाउन द बिगनिंग पार्ट, मिडल पार्ट एंड एंडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी हियर. Okay students, so students, this is your story map. After watching this video and after writing the story, you have to complete this worksheet as 2. Okay student, thank you for watching this video and watch it carefully.